Fine. So, on our last session or last class, what we have seen how to create the users, how to assign a profile to a user, and how to assign a license to a user. So, we have created around three users for which profile, CBI platform profile, okay, and one user for which profile, CBI Salesforce profile, because Salesforce has provided only two license for which profile, for which license, that is Salesforce full license, okay, Salesforce full license. So that's why one user was already created, that is a system admin. Second, we have created like a development user, okay. So we have two user for Salesforce license and profile is CBI Salesforce profile, and three user for CBI platform profile, okay. Now, there is a note I have written over here, that is we cannot remove, delete the user from Salesforce. Okay. We cannot remove or delete the user from the Salesforce. Okay. So, if we cannot delete, okay, or remove the user from Salesforce, अब इसके पीछे एक रीजन है, देर इज अ रीजन बिहाइंड इट, ओके, वो रीजन हम लोग ये दो पॉइंट्स होने के बाद देखते हैं, ओके. सो if we cannot delete the user or remove the user from Salesforce, for this Salesforce has provided us two options, okay, deactivating the user, okay, deactivating the user and freeze the user, and deactivating the user and freeze the user, okay. So now whenever we are creating a user in Salesforce, okay, whenever we are creating a users in Salesforce, you can see there is a checkbox called as, there is a checkbox called as active checkbox, okay, there is a checkbox called as active checkbox. So if we uncheck this active checkbox, that means your user is deactivate or inactive, okay. If we uncheck this active checkbox, that means your user is inactive or deactivate, okay, inactive or deactivate. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, what we can do, simple है, we can deactivate the user in Salesforce, okay. What we can do, we can deactivate the user in Salesforce. So how we can deactivate, how we can deactivate means select the user record. First one is what, select the user record, okay. Select the user record and open it, and open it, okay. Now second point is select the user record and open it. Open it means what? Go to setup. Okay. Type user over here. Okay. You can see the users link. In manage user, you can see the users link. So click on this user. Okay. And the user which you want to deactivate, just open that. Okay. Open that user. So if I'm opening this user development, so this is how I open my user, okay. Now click on edit button, you can click on this edit button and uncheck this active checkbox and uncheck this active checkbox. So let's see what happening, okay. So click on edit, okay, click on edit button to modify the user record, okay, to modify what, user record. Now third point is unselect the checkbox, okay, unselect the checkbox. कौन सा checkbox, that is an active checkbox, okay, active. Unselect the checkbox active. So as soon as you will unselect this active checkbox, your user will be deactivated, okay. As soon as you select or you unselect the active checkbox, your user will get deactivated, okay. Your user will get deactivated. Now save.
ओके नाउ से यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ओके। एज सुन एज यू आर डीएक्टिवेटिंग the user, okay, as soon as you are deactivating the user, it means what? That user will not able to access your salesforce org, okay। मीन्स वो यूजर अभी आपका सेल्सफोर्स का ऑर्ग एक्सेस नहीं कर सकता है। वो यूजर आपका सेल्सफोर्स का ऑर्ग लॉग इन नहीं कर सकता, मीन्स दैट यूजर इज नॉट एक्टिव यूजर, ओके। सो वो भले ही उसके पास लॉग इन क्रेडेंशियल हो, स्टिल ही कैन नॉट log in into your salesforce org, okay। Second most important thing, when you are deactivating the user, the second most important thing is that when you are deactivating the user, okay। So now when we have created this user, okay, जब हम लोगों ने ये यूजर बनाए थे, so what is mandatory? A user license is mandatory and profile is mandatory, okay। So now if suppose there are three users, okay, suppose there are three users with a license that is Salesforce license, okay, the user which is having a Salesforce license now, अब उसमें से एक यूजर क्या किया, हैज लेफ्ट द कंपनी, वो छोड़ के चले गया, फाइन। नाउ सो आई कैन नॉट डिलीट, सो व्हाट आई विल डू, आई विल डीएक्टिवेट, okay। So what I will do, I will deactivate that user, okay। So now in the replacement of that user, in the replacement of that user, some new person has joined, okay। Now what I want to create a user record, I want to create a user for that new employee। So what will happen, I will need to assign a license, okay। So I will need to assign a license। अभी मेरे पास कितने लाइसेंस है, कंसिडर देर आर थ्री लाइसेंस, ओके, थ्री लाइसेंस फॉर ए, फॉर बी एंड फॉर सी, ओके। नाउ सी लेफ्ट द कंपनी, सी लेफ्ट द कंपनी, ओके। नाउ अब सी के रिप्लेसमेंट में आया डी, ओके, देयर इज रिप्लेसमेंट ऑफ सी इज डी, ओके। नाउ अभी यहाँ पे मेरे तीनों के तीनों लाइसेंस यूज हो गए हैं, okay, my three licenses are already used। Now if d comes, so I want one more license to create the user, I want one more license to create the user। So in this case अब मुझे क्या करना पड़ेगा, I will need to request Salesforce to or I will need to request that I want to purchase a license, I want to purchase a license, okay। So it will be a what, वेस्ट ऑफ मनी, इट विल बी ऑफ वेस्ट ऑफ मनी, ओके। अब अगर ये तीनों भी यूजर चले जाते हैं तो मेरे लाइसेंस तो तीनों वेस्ट हो गए ना, ओके, तीनों मेरे लाइसेंस वेस्ट हो गए। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, वेस्टिंग ऑफ लाइसेंस नहीं होना चाहिए, मिस यूज ऑफ लाइसेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए व्हाट हैपन्स, whenever you are deactivating any user, whenever you are deactivating any user, तो वो यूजर को जो सेल्सफोर्स का लाइसेंस असाइन होता है, दैट लाइसेंस गेट फ्री, दैट लाइसेंस गेट फ्री, फ्री मीन्स वो लाइसेंस क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। मीन्स जैसे आपके पास तीन लाइसेंस थे, ओके, आपके पास अभी कितने लाइसेंस थे, थ्री, ओके। सो तीनों भी यूटिलाइज किया था, एज सुन एज, तो थ्री लाइसेंस आर इन यूज, सो एज सुन एज वी डीएक्टिवेट द सी यूजर, हमारे पास रिमेनिंग एक लाइसेंस बच जाएगा, ओके। नाउ इन यूज इज टू एंड रिमेनिंग इज थ्री, सो लाइसेंस गेट फ्री। सो डी, वी कैन असाइन दैट लाइसेंस टू डी, so we can assign that license to D। समझ में आया मैं क्या बोला? As soon as we are deactivating the user, that user, the license which was assigned to that user will get what, free, will get what, free। Means you can say as soon as the user get deactivated, the assigned license to that user will be written back to your administrator or in your org। हाँ, नहीं नहीं, देखो कैसा होता है ना, जैसे ही वो यूजर डीएक्टिवेट होगा, तो वो यूजर को जो लाइसेंस असाइन असाइन था, दैट वो लाइसेंस अभी अपने पास वापस आ जाएगा। मीन्स इट विल, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सी,
Okay, company information I'm going. Okay, now you can see there is a Salesforce license. Okay, active है. Total license is how many? Two. Use license is what? Two. And remaining license is zero. Okay, so अब ये दो में से if I deactivate one of the user, तो मेरे यहाँ पे total license two रहेंगे. Used license will be one and remaining license will be one. Means वो लाइसेंस हमारे पास वापस आ जाएगा. ये प्रोसेस नहीं नहीं, जैसे ही आप यूजर को डीएक्टिवेटेड करेंगे वो लाइसेंस रिटर्न अपने आप आ जाएगा. एंड इफ यू वांट टू असाइन दैट लाइसेंस टू अदर यूजर, आपको फिर जाके यूजर बनाना पड़ेगा एंड यू कैन असाइन दैट लाइसेंस टू दैट यूजर. अभी हम लोग आफ्टर डीएक्टिवेटिंग द यूजर. हाँ, ओके, सो लेट्स सी. फाइन. तो हम लोग व्हाट विल, हाँ बोलिए. नहीं होगा. दैट इज द रीजन वी कैन नॉट डिलीट द यूजर फ्रॉम सेल्सफोर्स. That is the reason we cannot delete the user from Salesforce. इसलिए Salesforce ने हमको, Salesforce has not given an option to delete the user because वो user से related बहुत सारा data there can be in our Salesforce org. Okay, so अभी नहीं, डीएक्टिवेट करना मतलब टोटली डीएक्टिवेट करना होता है. अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज फ्रीजिंग. ओके, फ्रीज एंड अनफ्रीजिंग, वो भी एक ऑप्शन है अपने पास. ओके, नाउ सो फर्स्ट विल सी द डीएक्टिवेटिंग कंसेप्ट. ओके, नाउ व्हाट विल डू, हम लोग एक काम करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं एंड लेट्स गो टू अवर यूजर. ओके, सो लेट्स गो टू अवर यूजर्स. One of the user or मेरे सब I am having around this much users. Okay, so for a Salesforce license, Salesforce profile. Okay, so I have created this user development. Okay, I have created this user development. Now what I will do, I will edit this. Okay, now what I will do, I will edit this, and what I will do, I will deactivate the user, means I will uncheck this. Okay, so deactivating the user remove them from all the delegate groups and sharing privileges. The following page prompt you to remove this user from any team. You can still transfer this user record to an active user and view the user's name under manage user. Okay, इसको छोड़ दो अभी. इसको क्या करना है, it is a warning actually. He is giving the, Salesforce is giving the warning. So now, okay, save. Okay, so now this user is inactive. Okay, now this user is deactivated. Okay, now this user is what? Deactivated. Fine. So we'll go to this company information. I will click refresh. Okay, I will do the refresh. Let's see what happened. See, active, total license 2, used license 1 and remaining license 1. Okay, total license 2, used license 1 and remaining license 1. So now you can create the one more user with the user license Salesforce. अगर आपको बनाना है, so you can create. So this is how your deactivating of user works. So this is how your deactivating of user works. Now what I will do, I will go and edit and I will active this. I will save. So now what will happen, refresh, see, used license 2. In this way your what works, in this way your deactivating of user works. Okay, in this way your deactivating of your user works. Once the user, okay, once the user get deactivated, okay, once the user get deactivated, then the
assigned license. Okay, assigned license will be returned back to administrator, admin. Okay, admin. उसके बाद में so that we can assign that license to another user. So we can assign that license to another user. Okay, किसी और को assign कर सकते हैं या फिर we can create a new user and we can assign. Okay, we can assign to some other user also जो already हमारे Salesforce में है, और we can create a new user and assign the license to that particular user. Okay, fine. Now my second point is what? Freezing of user. Okay, let's see one more thing in this. Okay, so now what I will do, I will go here. What I will do, login.salesforce.com. Now let's see, this is my user, this is my development user. Now this is my login. Copy, वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है ये. 158489. So now what I have done, I have logged in with what? My development user. मैंने अभी development user से login किया. Okay, let's go to a lead object. Okay, now create, we will create one lead. हम लोग क्या करेंगे, एक lead create करेंगे with the development user. Okay, with what? Development user. I will save. मैंने क्या किया अभी, I have created one lead with a development username. Okay, so see the lead owner is development user. Let's go and see, can we see the lead under my administrator? Can administrator can see the lead? Let's go to sales console, go to lead. You can directly paste the record ID. You can see, because the very first user we have created when we have created our Salesforce org, so it is a system admin, so he can see everything because he has whole permission to your Salesforce org. So see, now the lead owner is what? Development user. So now the lead owner is what? Development user. Now what I will do, I will refresh this page and I will deactivate it again. Let's see what happened to our record. Okay, let's see what happened to our record. Save. Okay, I have deactivated this. Let's go. This lead is still assigned to this development user because the user is in your Salesforce org only, but we have just deactivated it. Okay, we have just deactivated it because owner is mandatory for each and every record. Okay, owner is mandatory and it is a Salesforce standard field. Whenever you are creating the record, that record automatically get assigned to the user from which we are creating that record. Okay, whether it may be a lead record, whether it may be a standard object record, whether it may be your custom object record. Fine, इसलिए Salesforce has not given us to delete the user from the Salesforce org. Okay, so now let's go and again.
edit it, and we can activate. Save. Yes, obviously रहेगा, and if you want to change, you can change the owner of the record by click on this. You can change. Okay, you can change. जिसको भी आपको assign करना, you can assign. Fine. Now, because we don't want the data lost, because we don't want the data lost. Fine. Now, my second option the Salesforce has provided me is freeze the user. Okay, freezing the user or freeze the user. Freezing the user or freeze the user. Okay, so if suppose what happens, okay, there are three users. Okay, there are three users or two users. There is user A and user B. Suppose user B wants some around 1 month लीव फ्रॉम द कंपनी. ओके, उसको कंपनी छोड़ के नहीं जाना है, बट ही वांट अ लीव. ओके, बट ही वांट अ लीव मतलब वो वापस आने वाला है. सो इन दिस केस व्हाट वी कैन डू, वी कैन फ्रीज द दैट यूजर. मीन्स वी कैन फ्रीज दैट यूजर. वहां पे एक बटन प्रोवाइड करा हुआ है. मीन्स फॉर सम टाइम वी आर फ्रीजिंग द permissions from that permission for that users. Okay, by create रिकॉर्ड क्रिएशन के लिए या बाकी सारी चीज़ों के लिए हम वो यूज़र को क्या कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं कुछ दिन के लिए. बिकॉज वो यूज़र हमारे पास क्या आने वाला है, ही विल कम बैक आफ्टर सम डेज. तो इन दिस केस डीएक्टिवेट करने से बेटर है वी कैन फ्रीज दैट यूज़र. ओके, इन दिस केस without deactivating we can, what we can do, we will not deactivate that user, we will just freeze that user. Okay, so instead of deactivating the user, we can, what we can do, we can suspect the user permission for some time. Suspect means हम लोग उसके पास से कुछ देर के लिए सारे पावर्स निकाल ले रहे हैं फॉर वॉट, उसके रिकॉर्ड क्रिएशन से लेके हर चीज. ओके, उसके अभी अंदर सेल्सफोर्स के अंदर कोई परमिशन नहीं रहेगी उसको until he is unfreeze. जब तक वो फ्रीज है he cannot do anything. Once he get unfreeze he can do everything. Okay, now abhi we can unfreeze that user by clicking on that unfreeze button. Once we freeze, okay, it will get freeze. If you want to unfreeze you can unfreeze that user. But यहाँ पे एक चीज, there is a difference between this deactivating the user and freezing the user, और ये क्वेश्चन पूछते हैं mostly. So when you will freeze the user, okay, when you will freeze the user, your license will not be written back. आपका लाइसेंस रिटर्न नहीं होगा. your license will not get free. Means if there are three users A, B, C, and you freeze the user C, it means license is still with that user. Okay, so you cannot create the new user and you cannot assign the license to another user. Okay, उसके लिए आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा. सो मेजर क्वेश्चन पूछते हैं इन योर इंटरव्यू क्वेश्चंस, what is the difference between deactivating the user and freezing the user. So most adorable answer is like deactivating the user will release your license or license will be returned back, but freezing the user will not return back the license. Okay, अगर फ्रीज कर रहे हो तो आपका लाइसेंस वापस नहीं आएगा, पर डीएक्टिवेट कर रहे हो तो आपका लाइसेंस वापस आएगा. ओके, so instead of deactivating the user, okay, in Salesforce we can
freeze the user. Okay, you can freeze the user. Fine. Now we can also unfreeze the user by clicking on unfreeze button. Okay, by clicking on unfreeze button. Most important, if you freeze the user, okay, if you freeze the user, then assigned license, okay, will not be returned back, not be returned back. So this is the major difference between freezing the user and deactivating the user. How we can freeze the user? Very simple. Okay, select and open the user record. Okay, select and open the user record. Second, click on freeze button to freeze the user. Okay, means this is my user. Okay, no, this is not my user, this is my user. कहाँ से जाएंगे? Same from user. So you can see there is a freeze button. Okay, so you can see there is a freeze button. So ये हो गया हमारा freeze. Okay, this is my user is my, now my user is got freeze. If you want to unfreeze, click on this unfreeze button, you can unfreeze. Okay, सिंपल है. Unfreeze the button, unfreeze the user, click on unfreeze. और unfreeze button कब अवेलेबल होगा? Whenever, if you freeze the user, then only unfreeze button will available. Okay, so this is the difference between you are deactivating the user and freezing the user. Okay, समझा इतना? And I have also explained you the difference, और ये difference हमेशा याद रखना. हाँ बोलो ना. हाँ, यूजर कभी भी चेंज कर सकते हो. हाँ, कभी भी चेंज कर सकते हो. यूजर रिकॉर्ड के ऊपर का यूजर कभी भी चेंज कर सकते हो. दैट इज नो, नो प्रॉब्लम. बट अगर आपको उसका परमिशन है तो a system admin can do anything. अगर आपको परमिशन है तो यू कैन डू, एल्स आपके पास अगर परमिशन नहीं है तो यू कैन नॉट डू. डीएक्टिवेटिंग. यस, सारी चीजें हटा देते हैं. हम्म. हम्म. तो फ्रीज करते हैं. The basic difference is by deactivating you can free the license, but if you are freezing, license will not be get back. Okay, इतना ही बेसिक डिफरेंस है. तो याद रखना, इसके ऊपर यही क्वेश्चन होता है मोस्टली. ओके, और वन मोर क्वेश्चन एक और हो सकता है, why we cannot delete the user record from Salesforce. So because Salesforce has not provided the option, okay, to delete the user from the Salesforce org, and the reason is, and the reason is what? The reason is because data lost नहीं होना चाहिए, because Salesforce doesn't want to lost the data, and
a user is mandatory when you are creating the record. That record can be of any object, it can be of standard object, it can be of your custom object, okay, and it get assigned automatically if you are creating the record from that particular user. Okay, if you are creating that record, okay, if you are creating that record with a particular user, then वो अपने आप उसको क्या हो जाएगा, it will get assigned. Okay, now one more thing is there. You can see, if you want to reset the password, you can reset also with the help of this reset password button. अगर आपको reset करना है, so you can reset. Okay, you can reset. Now let's see, this is my development user. Okay, अभी इस, ओके ये तो लॉगआउट हो गया, फाइन, क्योंकि हमने उसको एक्टिव डीएक्टिवेट किए थे, दैट इज व्हाई इट इज गेटिंग लॉग आउट. ओके, नाउ इफ यू वांट टू रीसेट यू कैन रीसेट. ओके, आपको अगर रीसेट करना है, सो यू कैन रीसेट आल्सो विद द हेल्प ऑफ दिस रीसेट पासवर्ड बटन. एंड रीसेट, you can reset the password with reset password button on यूजर रिकॉर्ड. ओके, यूजर रिकॉर्ड, दिस जो यूजर का रिकॉर्ड है वहां पे हम लोग, we can, what we can do, we can set the password also. Fine. Now ये तो हो गया हमारा user. Okay, how to create the user, how to assign the user, how to assign the license. Okay, find what is the difference between your deactivating the user and difference between deactivating user and freezing the user. If you want to reset the password, you can do with the help of that reset password button. Okay, reset password button. Okay, now the next most important two topic is what, grant login access or prevent user from force logout from the session. Okay, so पहले देखते हैं grant account login access. पहले देखेंगे grant account login access. ओके, इसके अंदर भी आपको क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी. आपको जिसको पता है ही कैन आस्क द क्वेश्चन, जिसको नहीं पता ही कैन नॉट आस्क, बट स्टिल हमको ये पढ़ना है. ग्रांट अकाउंट लॉगिन एक्सेस, grant account login access, grant account login access. Okay, fine. Now what we have done, अभी तक हमने क्या किया, we have created the users. Okay, we have created the users. Fine. Now if I want to, if I'm an admin, okay, if I'm admin, अब मुझे इसको लॉगिन करना चाहिए, तो व्हाट शुड आई नो टू लॉगिन. मुझे लॉगिन करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, जो जो यूज़र हम लोगों ने बनाए हैं. फाइन, फॉर लॉग इन दैट यूज़र व्हाट आई वांट टू नो, मुझे क्या होना, क्या पता होना चाहिए. आई वांट टू नो यूज़र नेम एंड पासवर्ड. मुझे क्या पता होना चाहिए, आई वांट टू नो यूज़र नेम एंड password, but I don't know username and password. Okay, but I am a system admin, sorry, I am a system admin and I want to log in without username and password, then for some interval of time, then I can do that also, then I can do that also. Okay, and this permission is given to only टू पर्सन्स. ओके, अब ये परमिशन दो ही जनों को दी गई हुई है टू लॉग इन इनटू अ यूजर अकाउंट without using username and password. Okay, if I want to log in, okay, in Salesforce org with some another user but without using username and password, then that I can do, but that can be done by only two persons. कौन से दो पर्सन होंगे वो, द फर्स्ट पर्सन इज योर ऑर्गेनाइजेशन सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर.
First person is your Salesforce administrator. And who is your Salesforce administrator? The one when you are creating the Salesforce org, okay, at that time जो यूजर बनता है, that user is your Salesforce administrator user. Means in our account, who is Salesforce administrator? This Salesforce Cloud Blitz. Okay, this is our Salesforce administrator. Okay, I have created, मैंने एक कुमैत खतीब नाम का एक अकाउंट यूजर बनाया था, उसको भी Salesforce administrator का I have given the profile. Okay, but now I have deactivated that user. Okay, so now I want, what is, who is my Salesforce administrator? That is Salesforce Cloud Blitz. So this Salesforce Cloud Blitz can log in into your user customer also, user development also, user manager also, user testing also. Okay, means हम लोगों ने कल कितने यूजर्स बनाए थे? Testing user also, manager user also, customer user also, and I can also log in into my development user also without l- username and password, without username and password. But for that I need to give that permission. For that I need to give that permission to my Salesforce administrator. The first and the second one is Salesforce customer support person, sales official Salesforce customer person. ये दो जन को ही, only these two people can log in into your org without username and password. If you provide them the access, अगर आप उनको access provide करोगे, at that time only they can do this, at that time only they can do this, else you cannot. Okay, else you cannot. उसके अंदर एक और चीज है, you can decide. Okay, you can decide. हाँ बोलो। नहीं, कहीं पे भी नहीं जा सकता है। ओके, अभी मैं एडमिन हूँ। ओके, आई एम एन एडमिन नाउ, बट आई कैन नॉट लॉग इन इनटू दिस यूजर डेवलपमेंट। मेरे को अभी लॉग इन करना है यहाँ पे, आई कैन नॉट लॉग इन जब तक मुझे यूजर नेम और पासवर्ड पता नहीं है। आई कैन नॉट लॉग इन इनटू दिस डेवलपमेंट यूजर। है आपके पास कोई ऑप्शन? नो, वी डोंट हैव ऑप्शन, क्योंकि मुझे इसका पासवर्ड ही नहीं पता। फाइन। ओके, इफ आई वांट टू रीसेट, अगर मैं इसका पासवर्ड रीसेट भी कर दूं, बट लिंक कहाँ जाएगी? इट विल गोज टू द यूजर ईमेल आईडी, वो मेरे ईमेल आईडी पे तो नहीं आएगी। That is sure, because it is a free developer org, that's why we have put the same email. Okay, but in real time scenario it will not happen. If there are 10 employees, सबका email id will different. Okay, सबका email id will different, and at the time of creation of user you will put the email id of that particular person only. Okay, so that he can do each and everything. Okay, he can do each and everything, so he can also। हाँ बोलो। ऑर्ग में कहीं पे भी जा सकता है, बट डायरेक्टली ही कैन नॉट लॉग इन। ओके, आई नीड टू ग्रांट द परमिशन एज ए यूजर, एज ए न्यू यूजर। आई विल डिसाइड दैट एडमिनिस्ट्रेटर विल लॉग इन इनटू माय ऑर्ग विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड। अभी मुझे एक चीज बताओ। ओके, नाउ मुझे एक चीज बताओ। फाइन, अभी अगर हम लोग दो दोस्त हैं, फाइन, अगर मैं हम लोग अभी दो दोस्त हैं, एंड मुझे आपका गाड़ी यूज करना है। ओके, आई वांट टू यूज योर कार। सो मैं आपके घर में डायरेक्टली अंदर आ जाऊंगा, जहाँ चाबी रहती है वहां से चाबी उठाऊंगा, गाड़ी को सेल्फ मारूंगा और निकल जाऊंगा। इज इट पॉसिबल? दो हम लोग बचपन से दोस्त हैं। नहीं है ना पॉसिबल। अगर मुझे, इफ आई वांट योर कार, आई वांट टू आस्क यू। अगर दो भाई भी है, सो सपोज इफ आई वांट टू आस्क, देन
मुझे पूछना ही पड़ेगा. ओके, बिकॉज सेम एज मोबाइल, अगर इफ आई वांट टू एक्सेस योर मोबाइल, मुझे आपसे पूछना पड़ेगा. फाइन, कैन आई एक्सेस योर मोबाइल, है ना. सो इन द सेम वे इट वर्क्स, लॉजिकली इट वर्क्स इन अ सेम वे. सो दैट इज द रीजन, if you want that your system admin, if you want your system admin or a Salesforce support person, or if a Salesforce support person, official Salesforce support person want to log in into your org without username and password, then as a user you need to grant them a permission. Okay, as a user you need to grant them as a permission, and in the same way you can decide for how much time you can give them an access. It can be 1 day, it can be 3 day, it can be 1 week, it can be 1 month, it can be 3 month, or it can be a year. Okay, these are the option available in your Salesforce. अगर आपको आपके एडमिन को एक्सेस राइट देना है टू लॉग इन, देन 1 day, 3 day, 1 week, 1 month, 3 month, and 1 year. Okay, these are the options. Okay, in the term of user, you will decide for how many days your admin can log in into your org without your permission, means without username and password. Okay, now हम लोग वो भी चीज देखते हैं. ओके, so grant login access. So in order, लिख लेते हैं. So in order to troubleshoot the problem, okay, in order to troubleshoot the problem of a user, okay, we can grant our Salesforce account login access to our organization. Okay, to Salesforce administrator or Salesforce customer support person. इन दो जनों को दे सकते हैं, ओनली सेल्सफोर्स एडमिन एंड सेल्सफोर्स कस्टमर सपोर्ट पर्सन, ये दो जनों को ही वी कैन गिव द एक्सेस, एल्स वी कैन नॉट, बाकी लोगों को आई कैन नॉट गिव. यस, 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 वो ही देगा. ओके, सो विदाउट sharing user name and password, okay, without sharing username and password to admin or customer support, okay, person, without sharing username and password to admin, customer and support person, they can log in into users org. Okay, now we need to grant the access of the Salesforce to, we need to grant the access of Salesforce to admin. Okay, so we'll see how. Okay, सबसे पहले कहाँ जाना है, login in your Salesforce
or by your username and password. Okay, login into your Salesforce org by username and password. Let's go and log in. What will चालू है? सब सबके लिए स्टॉप हो गई? आपका नेट स्लो हो गया? ओके, आई विल रीशेयर अगेन. लेट मी नो. विजिबल? Okay, cool. So, first of all, log in you in your Salesforce org by your username and password. So let's see हमारे पास कितने यूजर थे. Users. Okay. Okay. So these are my users. So what I will do, I will log in into this user development. Okay. So इनका यूजर नेम क्या है? This is the user name development cloud blitz. मैं दूसरे ब्राउजर में ओपन कर रहा हूँ. फाइन. हाँ. Shift at the rate 2022. Okay. So now what I've done, I've log in with the user. Okay. मैंने वो user से log in कर लिया है. Okay. Now the second point is, the second step is go to your name, click on my setting. Okay. Go to your name and click on my setting link. Let's see. Is it possible? Firstly, we'll see in classic, then so this is my name, my setting. Okay. Now after that, the third point is click on personal link and expand. Okay. Click on personal link and expand. So this is my personal link. Okay. This is plus sign, expand. Okay. I have expanded. Now fourth point, click on brand account login. Grant account login access link. Okay. On where grant account login access link. Grant account login access link. So let's see. This is the grant account login access link. I will select this. I will click on this. Okay. As soon as you will click on this, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है. To assist with support issue, you may grant your administrator or a support person the ability to log in as you and access your data. Okay. ये है इनका यूजर नेम. Okay. The username of this. So see, grant access to, there are only two options are present: your company administrator and your Salesforce support. Your company administrator and your salesforce.com support. So my fifth point is select the person type. Okay, select what? Person type. अभी कौन से person type है हमारे पास? There are two person types: company administrator and Salesforce support person.
and whom Salesforce support person. Okay, now so we are not Salesforce support person. Okay, so we will select our company administrator. We will select what? Company administrator. So मुझे अभी इनको देना है. Okay, now my sixth point is timing. My sixth point is what? Timing. Select the time period. Okay, to grant the login. To grant what? Login. और timing कौन सा है? There can be 1 day, 3 day, 1 week, 1 month, 3 month, I think 1 year. This can be the provided time for grant login access. For what? For your grant login access. Now let's see. पहले से जाते हैं. Go to development user. Go to my setting. Go to personal. Go to grant login access, and you can select see 1 day, 3 day, 1 week, 1 month, 1 year. Okay, 3 months is not present. Okay, 3 months is not present, and 1 day, 3 day, 1 week, 1 month. Okay, 1 day, 3 day, 1 week, 1 month, and 1 year. So आपको जितने दिन के लिए देना है यू कैन डू. आपको जितने दिन के लिए देना है यू कैन डू. वहाँ पे आपका एक्सपायरी डेट भी दिया हुआ है. इफ यू आर सिलेक्टिंग 1 day इट विल एक्सपायर ऑन 21/2. फॉर 3 days 23/2. फॉर 1 week 27. फॉर 1 month 23, 20th of March, and for 1 year it will be on 20th of Feb 2023. Okay, so what I will do, I will select for 1 year. Okay, same for him also. I will click on save. Okay, I will click on save. So before clicking on save, we'll see how we can navigate with the help of Lightning Experience. So go to Lightning, click on this setup. Okay, and you need to type what grant user manage user. Just a minute. Company setting. 1 minute. Okay. Grant login access. Grant login access. Sorry. यहाँ से click on your name. Go to setting. Okay, इस setting के अंदर there is a my personal information, and in that there is a grant login access. Okay, and there is a grant login access means click on your profile. You will see the setting option. In left hand side you can see the grant login access. वही पेज पे लेके आएगा. Okay, in the same page, in the same information. So what I will do, I will click for 1 year. I will save. Okay, so now it is changed. Okay, now it is changed means now I can log in without username and password. Okay, so अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ. Okay, I will go over here. I will also close this. I will log in again with my administrator. Okay, with my administrator login. This is my administrator. I will click on this. Okay, fine. Now where I will go to setup. I will go to
user. Okay, click on the users, and you can see a development user, or in front of a developer user you can see a login button. Okay, this I have activated earlier, so now this I have activated. This is the login. Okay, so by clicking this login you can directly logged into your development user. Let's see, I will click on this login. I will directly get logged into my development user. See, logged in as a development user. So this is how your grant login access work. Any confusion? You can give permission for all users also. You can give permission for all users also. You can give permission for all users also. समझा? अरे yes or no? Okay. So in this way you can give the permission. ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ, हाउ यू कैन प्रोवाइड अ ग्रांट लॉगिन एक्सेस टू योर सेल्सफोर्स एडमिन. ओके, नाउ observation in Salesforce. Okay, in Salesforce, admins in Salesforce, admin accounts. Okay, admin will get. हाँ बोलो ना. Yes. नहीं उस वो we cannot act because we don't have access ना. Salesforce support persons means what? Suppose this is your org, okay, and this org is giving any kind of problem. Okay, so you can raise a case to Salesforce, then they will contact you. Okay, वहाँ का कोई support person, Salesforce का support person will contact you. Okay, those who are working in Salesforce, that person will contact you to solve your problem. Okay, to troubleshoot what your problem. अगर अभी if I will give the permission also, I cannot access this because I don't have the Salesforce. उनके पास एक अलग तरीके का rights होता है. Okay, we are just providing them our what user login. Okay, nothing that. So admin will get login link. What admin will get? Admin will get login link beside the user record. Okay, beside the user record means where हम लोगों ने अभी जहाँ देखे थे means if I am okay, so it is getting log out. Users, so I am getting a login link beside the user record. Okay, now the admin can click on the link to login into account directly. Okay, the admin can click on the link to login into account directly. So this is your grant login access. So this is what, this is your grant login access. Okay, now एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, विल कवर दैट आल्सो. ओके, बहुत इजी है. हम्म. 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 हाँ,
नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। ओके, बिकॉज एडमिन हैव ऑल द राइट्स, सो एडमिन विल डू व्हाट एडमिन हैव टू डू। एक यूजर दूसरे यूजर को परमिशन नहीं दे सकता, अगर ऐसा होता तो फिर हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। ओके, नाउ one thing I want to show you. Okay, so let's see. Okay, now what I am doing now, I am logging. मैं क्या कर रहा हूँ अभी यूजर डेवलपमेंट में, what I am doing, I am logging in. So what I have logged in. Okay, now what I have done, I have logged in. Okay, fine. See, अभी थोड़ा सा ध्यान से देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लॉग आउट करूंगा। what I will do, I will log out. जैसे ही मैं इसको लॉग आउट करूंगा, what will happen, मैं पूरी तरीके से बाहर आ जा रहा हूँ। what is happening, I am getting logged out from the both the users, from admin users also and from development user also, though I have logged in using my admin. Okay, though I have logged in as admin. Okay, so my query is that if I am doing login, okay, if I am doing login with the help of admin, okay, if I am doing login with the help of admin, fine, यूजर, ओके, मैं अगर एडमिन से यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ, ओके, सो इफ आई एम लॉगिंग विद द हेल्प ऑफ एडमिन विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड, ओके, नाउ whenever I am doing log out for this development user, whenever I am doing log out from this development user, मुझे क्या चाहिए, मेरा एडमिन का जो लॉगिन था, मेरा एडमिन का जो लॉगिन था वो लॉग आउट नहीं होना चाहिए। ओके, मीन्स आई डोंट वांट टू कम आउट फ्रॉम बोथ द अकाउंट, मुझे मेरा एडमिन का लॉगिन जैसा का वैसा ही चाहिए। मीन्स आई वांट टू एंड द लॉगिन सेशन ऑफ दिस डेवलपमेंट यूजर ओनली, नॉट माय एडमिन। समझ में आ रहा है, आई जस्ट वांट टू एंड द सेशन ऑफ दिस लॉग आउट, आई जस्ट वांट टू एंड द सेशन ऑफ दिस डेवलपमेंट यूजर, नॉट माय एडमिन यूजर। ओके, सो अभी मैं इस पे लॉग आउट कर रहा हूं, तो व्हाट इज हैपनिंग, मैं दोनों से बाहर आ जा रहा हूँ। ओके, सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, वेरी सिंपल, दो लाइन का ही है। ओके, प्रिवेंटिंग यूजर, प्रिवेंटिंग यूजर फ्रॉम फोर्स लॉग आउट फ्रॉम सेशन, प्रिवेंटिंग एडमिन यूजर बोल सकते हो। ओके, प्रिवेंटिंग एन एडमिन यूजर, प्रिवेंटिंग एन एडमिन यूजर फ्रॉम force logout from the session. So you understand now what actually I want to say. I want to end the session for my development user only. I don't want to end the session for my admin user, because I am doing login in my development user by clicking on that logging link in front of that development user. Okay, so what happened now, once the administrator has logged in a specific user, okay, and जो भी मैंने आपको अभी बताया, so what we need to do, we need to just close the session for our development user, not for an admin user. So what will happen, so that it will come back to Salesforce administrator account automatically, मुझे पूरी तरीके से बाहर नहीं आना है और डबल से एडमिनिस्ट्रेटर में लॉगिन नहीं करना है जैसे अभी हो रहा है। ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, इन यूर एडमिनिस्ट्रेटर मेन्यू, ओके, आपको क्या करना है, जस्ट गो टू सेटअप, ओके, go to set up
administrator menu. Okay, go to setup. From setup कहाँ जाना है? You need to go to your administrator menu. First click on security control. कहाँ जाना है? Administrator menu. From that security control. After that click on session link. Okay, click on session setting link. Okay, click on where? Session setting link. Now third point is go to session टाइम आउट सेक्शन. ओके, यहाँ पे दो सेक्शन है. एक होता है सेशन टाइम आउट सेक्शन एंड द सेकेंड इज गो टू सेशन सेटिंग सेक्शन. ओके, दो टाइप के सेक्शंस होते हैं. वन इज सेशन टाइम आउट सेक्शन एंड अनदर वन इज योर session setting section. Okay, now go to session timeout section and unselect all the checkbox. Unselect all the checkbox. सेम यहाँ पे भी आपको क्या करना है? सारे checkbox को क्या कर देना है? अनसिलेक्ट कर देना है और जाके सेव कर देना है. सो आपका काम हो गया. मीन्स आपका काम क्या हो गया? नाउ योर वर्क इज डन. So let's go and do security control. So what I will do, I will log in my administrator. Login. Now go to setup. Setup से कहाँ जाना है? Administrator section. In administrator section where security control. Where is my security control? This is my security control. Just expand it. Now go to session setting will be there. So see there is a session setting. Open this session setting. You can see two sections: session timeout, session setting. Session timeout and session setting. तो जितने भी यहाँ पे चेक बॉक्स है सबको अनचेक कर लो. ओके, जितने भी यहाँ चेक बॉक्स है सबको अनचेक कर लो. नाउ व्हाट इज दिस टाइम एट वैल्यू? टाइम आउट वैल्यू मीन्स सपोज अगर आप किसी यूजर के अंदर लॉग्ड इन हो. ओके, आप किसी यूजर के अंदर लॉग्ड इन हो और योर स्क्रीन इज स्टेबल फॉर अराउंड 2 आवर्स और आपकी 2 घंटे के लिए जो स्क्रीन है वो जैसे कि वैसी है, तो वो आपको क्या बोलेगा? अपने आप लॉग आउट कर देगा. अपने आप क्या कर देगा? वो लॉग आउट कर देगा. सो देयर इज टाइम. आप कितने देर के लिए उसको रख सकते हो? ओके, 15 मिनट screen stable, 30 minute, 1 hour, 2 hour. By default it is always a 2 hour. By default it is always 2 hours. So with the help of this we can change the session setting. Means we can kill the session for that development user only, not for admin. So let's go and save. यहाँ पे कहीं सेव का बटन होगा. बाकी चीजों को कुछ नहीं करना है, सेव कर देना है. Okay, now I have saved. What I will do, I will go to setup. इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार. Go to users. Click on this user. Okay, login. What I have done, I have logged in. Okay, I have logged in. Now what I will do, I will log out. Let's see मैं पूरा बाहर आता हूँ या I will stay in admin. See, I have not logged out from all the users. I have just logged out from where? From the development user. Go for manager also. I have logged in. I have logged in as manager user. Okay. Now what I will do, I will log out. So see,
Now my only my user sessions are getting killed, not my admin session. Okay, so this is how you can prevent the user from force logout. Okay, with the help of session setting, with the help of what? Session setting. Okay, with the help of what? Session setting. With this we can kill the user session, not admin user session. Okay, fine. So this is your all about user management. अभी तक जितना भी हम लोगों ने देखे, it was your user management. Okay, user management means from very start to this end. ये था हमारा. हाँ. एडमिन के लिए लेट्स सी एडमिन के सिक्योरिटी चेक्स में क्या है. बाय डिफॉल्ट वही रहता है. सिक्योरिटी सेटिंग, सिक्योरिटी कंट्रोल, सेशन सेटिंग 2 आवर्स ही है. बाय डिफॉल्ट 2 आवर्स रहता है सबके लिए. आप चेंज भी कर सकते हो. ओके. Yes, so this is your user management. Fine.